Enthalpy. So enthalpy of a system is a sum of U, that is internal energy, and a work equivalent to pressure volume. H is equal to U plus PV. Enthalpy of a system is a sum of internal energy and the energy equivalent to work. This is the definition of enthalpy ka. Now change in enthalpy. Change in enthalpy is delta H. Okay, and delta है ना, इसका मतलब it will be what? H2 minus H1. तो ये क्या हो गया? State function ना? Yes, all of you. It will be a state function. Yes, sir. It is depending on final and initial state. So it will be a state function. Change in enthalpy is a state function. Now H2 will be what? U2 plus P2 V2. Correct, all of you? H1 will be U1 plus P1 V1. This formula. मैम वो PV वर्क डन है ना? हाँ, P work. In chemical thermodynamics, work is done in form of PV, pressure volume. So delta H will be what? H2 minus H1. Value substitute karo. U2 plus P2 V2 minus U1 plus P1 V1. U2 minus U1. वर्क डन का PV होता है और चेंज इन वर्क डन एनर्जी का डेल्टा V होगा ना, P into डेल्टा V. Okay. Let pressure be constant. So P2 is equal to P1 and that is equal to P. So ये हो गया U2 minus U1 plus P V2 minus V1. So ये तुम्हारा क्या है? डेल्टा H है ना? Yes, ma'am. So delta H is equal to U delta U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus P delta V. Okay, all of you? Yes, ma'am. इसको नोट डाउन करो फटाफट. Take screenshot. I'll wait for 1 minute. Only for 1 minute. Huh?
अभिषेक का क्वेश्चन है why we are only taking pressure constant and not volume. Because So work pressure, done का formula isothermal conditions में applicable है ना, ये वाला pressure into volume. हाँ अभी whenever means अभी भी हम लोग we are sitting in our room, pressure is constant ना. Yes, all of you. Yes, There is ma'am. one atmospheric pressure. So pressure is constant. That's why we have taken pressure constant. But under constant pressure, volume can expand, can contract. It can have work. So expand होगा, volume increase होगा. Compression होगा, volume decrease होगा. तो volume change होता है. Clear, Abhishek? Yes, ma'am. So कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना स्क्रीन देखने में? All of you? नहीं मैम. No, ma'am. Now, next is the relation between delta H and delta U. Relation between for chemical reaction. For chemical reaction. Okay. So अभी हम लोग को फॉर्मूला मिला है डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V. For solids and liquids in reaction, change in volume is very small. बहुत छोटा होता है change in volume. मैम क्या लिखा आपने? For solid liquid R. For solids and liquid in reaction, delta V is very small. Therefore, delta V is neglected. And delta H becomes equal to delta U. Okay? Delta H is equal to delta U. For gases in a reaction, delta V is large and therefore cannot be neglected. So delta H is equal to delta U plus P V2 minus V1. PV2 minus P V1. Yes. Yes, Ruddhi, what you are asking?
if I apply ideal gas equation, PV is equal to nRT. Now PV2 will be N2RT. Now at constant temperature and pressure, volume is directly proportional to number of moles. Yes? We can write delta U plus Avogadro. N2RT. हाँ, वैसा ही लिखना है. PV1 that is equal to N1RT. ठीक है? So इसको मैं यहाँ पे substitute करती हूँ. We can take RT common. So it will be delta U plus N2 R T2 minus N1 R T. T2 नहीं, सिर्फ T आएगा. Pressure is constant. Yes, delta U plus RT common, N2 minus N1. So delta U is equal to plus delta nRT. मैम तो ये आइसोथर्मल कंडीशन होगा ना? हाँ. Means it is isothermal as well as isobaric. We have considered Avogadro law. Na? Avogadro law is at constant temperature and pressure. Delta H is equal to delta U plus delta nRT. तो तो मैम ये ऐसे दो प्रोसेसेस साथ में हो सकता है, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक या आइसोबैरिक और हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है. नहीं, डेल्टा बिकॉज एक प्रोसेस में जो कांस्टेंट है वो दूसरे प्रोसेस में इन्वॉल्वड है एंड इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इसके लिए बोला. हो सकता है ना तनुष, इसीलिए तो लॉ है ना एवोगैड्रो लॉ. Gay-Lussac's law of combining volume भी है. It is at similar pressure and temperature ना. मतलब मैम एज अ एग्जांपल मैं बोलूं तो अभी आप आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हो, बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट एंड इफ यू टेक इट टुगेदर तो कैसे होगा? See, दो process can take place simultaneously at one place. अभी for example अगर तुमने AC on किया है, so temperature constant रहता है ना, बट वहां पे गैस का एक्सपांशन या फिर कंप्रेशन हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है. अभी रिएक्शंस जो होते हैं इंडस्ट्री में, नाउ एक पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है. तो वो टेम्परेचर उन लोग क्या करते हैं, अभी सपोज तुम्हारा रिएक्टर है, इट इज अ क्लोज रिएक्टर, ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, उसका मींस डिकम्पोजिशन हो रहा है प्रोडक्ट का. कभी उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना. तो दोनों भी साथ में हो रहा है ना प्रोसेस. हाँ मैम समझा. तो 80 डिग्री को हम एक्सटर्नल मींस से उसको कांस्टेंट रखने का ट्राई करते हैं ना, तो दोनों कांस्टेंट होएगा, आइसोकोरिक भी हो जाएगा और आइसोथर्मल. हाँ. So delta n is थियरी what? वाइज देखा जाएंगे ना मैम, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. नहीं, बट प्रैक्टिकली ये चीज हो सकती है. हाँ मैम, वो प्रैक्टिकली आपने समझा तो समझ. Delta n is what? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, N2 minus N1. N2 minus N1 is number of moles of gaseous product upon gaseous minus gaseous reactant. You have to only consider gas, जैसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था. ओके ऑल ऑफ यू. और ये डेरिवेशन पूछते हैं बोर्ड्स एग्जाम में. राइट इट फास्ट. I'll give you 1 minute time or you take screenshot.
It's done. चलो Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले Yes, लिया ma'am. आप लोग ने. Now next is work done in chemical reaction. Work done in work done in chemical reaction. So all of you, W is what? Minus PEX delta V. Let PX be P. So pressure is constant, volume is changing. Now again same PV2, that is N2 RT. PV1, that is equal to N1 RT. अभी ये values को substitute करते हैं. So W is equal to minus N2 RT plus N1 RT. So W is equal to minus RT N2 minus N1 minus RT delta N. So W is equal to minus delta N RT. W is equal to minus delta nRT. Okay, all of you. Now what is delta N here? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Clear? Yes, ma'am. Yes, all of you. 1 minute time. Note it down or take screenshot. Next is the first law of thermodynamics. For various process. So first है isothermal process. So tell me what is isothermal process, all of you. We have done this now. Constant. The temperature is constant. Temperature constant. There is no exchange of heat. Yes. No exchange of heat, wrong. Temperature is constant. तुम्हारा heat will be either absorbed or evolved. To keep temperature constant, delta T is 0 and delta U is 0. Yes, all of you. This is correct, na? Yes, ma'am. First law of thermodynamics क्या है? Delta U is equal to Q plus W.
but this is 0. तो Q क्या हो जाएगा? माइनस W हो जाएगा और Yes. W will become minus Q. बराबर ना? So इसका मतलब क्या होता है? Q पॉजिटिव Q is equal to minus W, यानी हीट एब्जॉर्ब. पॉजिटिव यानी क्या? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम ना, and that is equal to work done by system. This is clear all of you? Minus W का मतलब क्या होता है? Work done by system. Yes, अब ma'am. इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव W है, इसका मतलब क्या है? Work is done by surrounding ना, and that is equal to heat evolved by system minus Q, यानी heat is evolved by system. Clear? Next is adiabatic process. Now what is adiabatic process? Yes, all of you. What is adiabatic Is process? constant. Huh? No heat transfer. No heat transfer. Q is constant. U is equal to Q plus W. This is 0. So इससे हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा U is equal to W ना? मैम वो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके लिए वो भी 0 हो गया ना फर्स्ट कंडीशन. Yes. So डेल्टा U is equal to W का मतलब क्या है? ये प्लस डेल्टा U is equal to प्लस W है. Means increase in internal energy is equal to work done on system. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस डेल्टा U is equal to माइनस W. So decrease in internal energy is equal to work done by system. तो जब भी सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम का एनर्जी यूज होता है ना फॉर डूइंग वर्क, एंड देयरफॉर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. क्लियर? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. यस मैम. नेक्स्ट हम लोग करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. In isoporic process, delta V is 0. Yes, all of you? No change in volume, delta V is 0. So delta V 0. W क्या होता है? P delta V होता है ना? तो ये भी 0 हो गया. Now first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. So delta U is equal to Q. इसका मतलब क्या है? Increase in internal energy is equal to heat absorb. हीट जब भी एब्जॉर्ब होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है. और वी कैन ऑल्सो राइट इट माइनस U is equal to minus Q. So decrease in internal energy is equal to heat evolved. Yes, all of you, is this clear? Yes, miss. So you have to note down one thing. Delta U is equal to QV.
means internal energy is equal to heat transfer at constant volume. Okay, all of वो you. प्रूफ कैसे हुआ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वैष्णवी अभी इधर ध्यान दो पहले, फिर मैं सब सारी स्लाइड्स बताती हूँ. जस्ट पे अटेंशन नाउ. क्या बोल रहे हो तनुष? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आपने प्रूफ कैसे किया वो? ये देखो ना, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट ना, देयर इज नो हाँ चेंज मैम. वॉल्यूम, W जीरो. सो इसमें ये जीरो डालूंगी तो डेल U इज इक्वल टू QV ना. So अच्छा, Q is what? Heat transfer at constant volume ना. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब Delta U is equal to QV is not an isothermal process ना, क्योंकि V is not zero. delta U is equal to Q is an isocoric process only Tanush. Delta U is equal to Q क्यों आया? क्योंकि W जीरो है, W क्यों जीरो है? क्योंकि डेल्टा V जीरो है. नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा U is equal to QV, क्योंकि V जीरो नहीं है ना, इसके लिए आपने V कंसिडर किया ना उधर. ये V इधर मैंने सुफिक्स में लिखा है इसके, क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, गॉट लिखा इट. है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Okay. Now fourth is isobaric process. Isobaric process में pressure is constant. But कौन सा pressure constant होता है? Atmospheric ना. So तुम्हारा इक्वेशन क्या है? डेल्टा U is equal to Q plus W. Q minus PX delta V. बराबर ना all of you? अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, Q is equal to डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये उस तरफ चला गया. Yes? Can I write it like this, all of you? Yes, miss. अभी हम लोग ने एक इक्वेशन किया था, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. किया था? Yes? Yes, miss. यस में तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 1 and 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा H डेल्टा is equal H to Q. और ये Q क्या है? P है ना. इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर ना. डेल्टा H is equal to QP. Change in enthalpy is equal to heat absorbed at constant pressure. Clear, all of you? This is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Delta Yes, ma'am. H and QP both are state function. Delta U and QV दोनों भी state function है. Okay. So you can take screenshots from first screen. ये first है.
Next. Ma'am, can you show the yes, ma'am. मैम वो पॉजिटिव है इसके लिए आपने लिखा ना हीट एब्सॉर्ब दैट कांस्टेंट प्रेशर वरना रिजेक्टेड हो हाँ नेगेटिव आएगा तो रिजेक्टेड इवॉल्व मैम और वो लास्ट वाला लाइन समझाओ डेल्टा यू एंड क्यूपी आर स्टेट कांस्टेंट हाँ डेल्टा यू नहीं सॉरी डेल्टा एच है ये अभी वो तो किया था ना हम लोगों ने डेल्टा एच स्टेट फंक्शन किया था ना वो समझा सो क्यूपी भी स्टेट फंक्शन होगा ना यस that गॉट is इट equal to गॉट इट delta गॉट H. इट यस मैम Yes, all of you. मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है रीड करो सब लोग क्या है क्वेश्चन C3H8 plus 5O2 is giving you 3CO2 plus 4H2O. Delta H is minus 2043 kilojoule. How much pressure volume work is done and what is the value of delta U at constant pressure of 1.013 bar when volume changes plus 22.4 dm3.
चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच इज -2043 किलो जूल। प्रेशर है 1.013 बार एंड डेल्टा बी है +22.4 dm³। So can we calculate pressure volume work done? Yes, all of you. Yes. W is -Px delta V. Correct now? कितना आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क? मुझे बताओ, मुझे जूल्स में चाहिए आंसर। डू इट फास्ट। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, कैलकुलेट प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन जूल्स। कन्वर्ट करो बार dm³ को बाद में। मुझे आंसर बताओ फटाफट। टू 2269.12. नेगेटिव ना? Yes, ma'am. So this will be -1.013 into 22.4. So ये आएगा -22.69 बार dm³। Now 1 bar dm³ is equal to 100 joules ना? So ये कितना हो जाएगा? -2269 joules। किलो जूल में कितना होगा? -2.269 को मैं 7 करती हूँ किलो जूल्स। अभी नेक्स्ट क्या बोला है इन लोग ने कैलकुलेट करने के लिए? डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो डेल्टा एच डेल्टा यू कैलकुलेट करना है ना। डेल्टा यू इज डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज -2043 माइनस इसका वैल्यू कितना आया है? पी डेल्टा वी का वैल्यू कितना आया है? 2.27 ना? किलो जूल ना? किलो जूल वाला लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल होना चाहिए। समझा यहाँ पे ऑल ऑफ यू? ये माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पी डेल्टा वी चाहिए। सो पी इंटू डेल्टा वी यानी क्या होगा? 1.013 इंटू 22.4। समझा ना? सिर्फ वैल्यू लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। नहीं तो फिर तुम लोग -2.27 लोगे। -2.27 नहीं आएगा। सो ये कितना आएगा? -2045.27 किलो जूल।
Is this clear, all of you? Yes, ma'am. इसको नोट डाउन करो, चलो फटाफट. और क्वेश्चंस भी लिखा करो. हाँ, मैम हमेशा किलो जूल के फॉर्म में ही रहेगा ना? हाँ, अभी इधर डेल्टा एच जो है वो किलो जूल में दिया था, इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया उसको किलो जूल में. ओके. नॉर्मली वर्क डन पूछा तो उसको किलो जूल में हाँ, कन्वर्ट अगर करना जूल में रहेगा तो देखने का क्वेश्चन में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कुछ करने. मेंशन नहीं करेंगे तो किलो जूल. यूजुअली किलो जूल में ही होता है, बट देखने का क्वेश्चन में क्या है, कैसा है यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंग करने का. So all of you, I have sent you next question also. तो सब लोग इसको कैलकुलेट करेंगे फास्ट. लिख के हो गया ना सबका? Yes, all of you. It's done ना? यस मैम. So start solving. मैम इसमें हिंट मिलेगा क्या थोड़ा? कितना आया आंसर? नहीं मैम नहीं समझ रहा हूँ. यस, आ रहा है किसी को? हाँ मैम, 1 मिनट. हाँ मिस हो रहा है रुको. यश, होमवर्क भी होना चाहिए. हाँ, इधर सब आता है सॉल्व करने के लिए और होमवर्क नहीं होता है.
मैम आपको आंसर भेजा है। मिस मैंने भी भेज यशस्वी एंड यश का आंसर सेम है। यस एंड इट इज करेक्ट। यशस्वी का आंसर एकदम करेक्ट है और यश ने साइन नहीं डाला है। इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव देन इट इज रॉन्ग। चलो अभी ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन क्या दिया है? एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है तुम्हारा? 2C सॉलिड plus H2 is giving you C2H6 gas. So इसके लिए डेल्टा H कितना है? -84.4 किलो जूल है। कैलकुलेट डेल्टा U। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा U कैलकुलेट करना है and R is given. So for the chemical reaction, what is the relation between delta H and delta U? Yes, delta H is -84.4. That is equal to delta U plus delta nRT. अभी इसके लिए delta nRT कितना आएगा? What is delta N, all of you? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So ये तुम्हारा है 1 और ये कितना है 3. 1 minus 3 minus 2. करेक्ट ना? -2 8.314 किलो जूल में है। दिस इज इन किलो जूल, तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज 25, दैट इज 298. So can you calculate this now? Yes, all of you. Yes, miss. करो इसको कैलकुलेट फास्ट। मैम डेल्टा एन नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? देयर कैन बी अ डिक्रीज इन मोल्स। यहाँ पे 6 मोल्स है ना, 6 से 1 हुआ, 6 नहीं सॉरी 3 मोल्स है, 3 से 1 हुआ, सो देयर इज डिक्रीज इन मोल्स। Yes, all of you do it fast. मैम रिएक्शन पे पता चलता है क्या पॉजिटिव में आंसर है क्या नेगेटिव में? नहीं, वो सॉल्व करके ही पता चलेगा। ओके मैम।
क्या हुआ, आया कि नहीं आया आंसर? हाँ मैम कर रहा हूँ। गेटिंग करेक्ट आंसर. This is in kilojoule. This is also in kilojoule. So it will come 79. Minus, na? Okay. Yes, ma'am. हाँ मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन भेजा है देखो मैंने ग्रुप में. रीड करो क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग इट. Yes, Yashashri, your answer is correct. मैम बोलो कि आपने इतने सारे फॉर्मूले थे तो उसमें से कौन सा इधर अप्लाई करना है वो कैसे ये करें. केमिकल रिएक्शन है ना? तो वो डेल्टा एनआरटी वाला लगेगा. हाँ. सो तुम्हें डेल्टा यू कैलकुलेट करने बोला है, डेल्टा एच दिया है क्वेश्चन में. यस वृद्धि, करेक्ट है. योर रिएक्शन इज C2H4 गैस प्लस HCl लिक्विड, नहीं गैस है, is giving you C2H5Cl gas. मैम और ये डेल्टा भी एच फॉर्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी. क्या 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 कौन सा फॉर्मूला है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी. For chemical reaction, work done for chemical reaction. This is a chemical reaction. So delta U कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा U कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT ना, ऑल ऑफ यू. डेल्टा N कितना आएगा? माइनस डेल्टा एनआरटी किसके लिए आता है, वो किसके अंदर आता है? वो W के लिए है. क्वेश्चन में क्या बोला है? डेल्टा यू कैलकुलेट. फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा यू. तो मैं पहले डेल्टा यू के लिए कर रही हूँ कैलकुलेशन. डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच
माइनस डेल्टा एनआरटी, बराबर ना। अभी डेल्टा एच कितना है, -72.3 किलो जूल, माइनस ऑफ -1 8.314 जूल होता है, इसीलिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल, इनटू टेम्परेचर कितना है 298. So now you can calculate delta U. ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो फास्ट। परीक्षा रॉन्ग है आंसर। Yes, Bianca and Steffi, your answer is correct. कितना आता है 8.314 इंटू 298 इंटू 10⁻³ is 2.47 आया ना। So this will be minus 69.823 kilojoule delta U. Yes, all of you getting same na? Okay, Rashmi, Vinita and Preksha correct. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है उसके अंदर। क्या है क्वेश्चन? हाउ मच पीवी वर्क इज डन। सो केमिकल रिएक्शन के लिए W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी होता है ना, और ये माइनस डेल्टा एनआरटी कितना है -2.477 को मैं 8 कर सकती हूँ, करेक्ट ना। बट यहाँ पे डेल्टा माइनस साइन ऑलरेडी है, -1 into 8.314 into 298. So minus minus cancel. It is 2.48 kilojoule. Clear, all of you? Yes, yes. Yes, ma'am. So ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन में होमवर्क में दे रही हूँ। हाँ? So if it is possible to solve it today only, it will be better for you, क्योंकि इसके बाद मेरा लेक्चर नहीं है, तुम लोग का संडे को एग्जाम है। So अगर ये सब अभी सॉल्व कर दोगे आज ही, तो शायद मैं शाम को तुम लोग को बता सकती हूँ if you are unable to solve. Yes, all of you, next question is on your screen. Not on your screen, in your group. Read the question and start solving it.
Calculate work done in oxidation of 1 mole of HCl. So reaction क्या है तुम्हारा? 4HCl plus O2 is giving you 2Cl2 plus 2H2O. Everything is in gas phase. So ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्या 1 मोल के लिए है कि 4 मोल्स के लिए है? In this reaction, how many moles are getting oxidized of HCl? Is it 4 or 1? 4 ना? ये 4 है ना, यहाँ पे 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, बट क्वेश्चन में बोला है 1 मोल का, तो मैं ये रिएक्शन को डिवाइड करती हूँ 4 से. So this will become HCl plus 1/4 O2 is giving you half Cl2 plus half H2O. Clear all of you? मैम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या कि 4 में से सिर्फ 1 को लेते रिएक्शन में? कि जरूरी तो पूरे को डिवाइड करना था 4 के साथ. हाँ, पूरे को ना, पूरा बैलेंसिंग तुम्हारा डिस्टर्ब होगा ना उसके वजह से. So now you can calculate all of you work. मतलब 1 मोल ऑफ O2 4 HCl को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट हमको 1 मोल HCl चाहिए उसके हाँ, लिए. इसीलिए HCl 4 की जगह पे 1 होना चाहिए था, इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 4 किया. Half and half is 1. 1 minus 1 plus 3/4. 1/4. So 1/4 आएगा ना आंसर. Yes, miss. Minus 1/4. So अभी सब्स्टिट्यूट करो. minus 1/4 minus of minus. टेम्परेचर कितना है? 200 है. Means 473. Yes, all of you, can you calculate this? Yes. Do it fast. कितना आ रहा है all of you answer? No, Vraj, wrong. Preksha, wrong. Ma'am, how are you getting delta N? क्या? Yes, Preksha, your answer is correct. 983. Correct है. 983 correct. मैम मुझे 979 आया. दूर आ रहा है आंसर. What is the formula to calculate delta N, Kesar? Number of moles of gaseous product
minus number of moles of gaseous reactant. So product में कितने moles है? Half plus half 1 हो गया ना, minus number of moles of gaseous reactant. Reactant में कितना मोल है? इधर 1 है, 1 plus half ना, plus 1/4 plus 1/4. So मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 1 minus 1 minus 1/4. This get cancel out, so it will be minus 1/4. Okay. चलो बी वाला करो सब लोग. Decomposition of 1 mole of NO at 300 degrees Celsius for the reaction. This is the given reaction and they are asking you is for the decomposition of 1 mole of NO. मैम फर्स्ट वाला जो है वो 983 जूल्स में आएगा ना? हाँ जूल्स आएगा, करेक्ट, जूल्स आएगा. दिस इज इन जूल्स ना, so this will be also in joules. Yes, so for B1 they are asking you is for the 1 mole of decomposition of 1 mole of NO. तो 1 mole of NO के लिए अभी मैं क्या करूंगी? क्वेश्चन में तो 2 mole है ना NO का. 2 कर दो ना मैम. Okay. So NO is giving you half N2 plus half O2. Everything is in gas phase. So to calculate W, I need delta N, Which is 1 minus 1 0. so half number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So gaseous product में कितना है? Half है ना, half and half 1 minus 1 0. W is minus delta nRT. So W is also 0. This is clear, all of you? Yes ma'am. So now similar questions I'll give you in homework. So you just do it and come. इवनिंग में करोगे, करके आओगे तो तुम लोग को ही फायदा होगा. Okay, all of you? Yes. So ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ. अभी मुझे एक्चुअली और एक टाइप का क्वेश्चन लेना है, वही मैं ढूंढ रही हूँ. एक मिनट. एक छोटा क्वेश्चन करते हैं. We still have 10 minutes left. दो क्वेश्चन भेज रही हूँ ग्रुप में, फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर्स बताओ. Yes, all of you start doing it fast.
यस वृद्धि, जितना एग्जाम आज इवनिंग तक होगा उतना ही एग्जाम में आएगा. Yes, Tanush and Bianca, your first answer is correct. Preksha wrong. Bianca correct. Niyati correct. Tanush correct. Vruddhi correct. Preksha correct. Yash correct. Yes, all of you. First क्या बोला है? Gas is expanded by supply of 2400 heat and work is found to be done. Gas expand हो रहा है. So work done will be negative ना. So इसको ऐड करो, कितना आता है? Yes, यशस्वी correct है. 1063 joules. This is clear, all of you? Yes, Niyati correct. Second one क्या बोला है? System absorbs 500 heat. It means it is plus 500. Q is plus 500 and does equivalent to 200 joule on its surrounding. Means work is done by system on surrounding. Means it is minus 200. तो डेल्टा यू कितना रहेगा? 300 ना. Okay. This is clear, all of you. Yes, So we'll stop here and we'll continue this chapter in evening. Okay. Yes, ma'am. Bye. Chalo then. Bye bye. Bye, ma'am. Thank bye, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.